ओके, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, लेट ए एन इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/n क्यूब and bn equals to sine of 1/n for all n belongs to set of natural number. Then option है, both summation n equals to 1 to infinity an and summation n equals to 1 to infinity bn are convergent. ऑप्शन बी बोल रहा है summation n equals to 1 to infinity bn is convergent but summation over bn is not convergent. ऑप्शन सी बोल रहा है समेशन ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट. ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट. सो ओके, ठीक है. तो हाँ, तो गिवन समेशन n equals to 1 to infinity an equals to summation n equals to 1 to infinity sine of 1/n cube and where mod of an equals to mod of sine of 1/n cube. ठीक है. So this mod less equals to 1/n cube. We know that sin x less equals to mod of sin x less equals to x. ठीक. तो इसको एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ. as summation over n equals to 1 to infinity 1/n cube is convergent by p test by p test so by comparison, by quick comparison test. So by quick comparison test summation over n equals to 1 to infinity mod of n is convergent. ठीक है. So comparison test summation of mod of n is convergent. Also we know that every absolutely convergent series is convergent.
So summation n equals to 1 to infinity n is convergent. ठीक है. So by comparison test and also the property of every absolutely convergent series is convergent. So as mod an is convergent, so an is convergent. ठीक है. तो फर्स्ट जो सीरीज था, सीरीज वो कन्वर्जेंट हो गया. तो सेकेंड सीरीज को देखते हैं क्या है. चलिए. recall Jordan inequality. So we establish the Jordan inequality and then try to prove the series is either convergent or not. So first we establish Jordan inequality. So उसके लिए क्या करना होगा, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. पहले ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ, इसको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ इन द इंटरवल 0 to पाई. सो इसको π/2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 पे साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा 1. सो इसको π/2 पे साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा 1. नाउ वी try to find the equation of the line passing through the point origin and π/2, 1. So now we try to find the equation of the line. So first मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट को लिख लेता हूँ. ठीक है. किस तो काम करता हूँ. तो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड π/2 1. So now we find equation of line passing through these points. ठीक है. passing through these points. So equation of the line क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा y minus k y naught that is 0 into equals to slope क्या होगा y 1 minus y0 that is 1 minus 0 upon x1 minus x2 that is π/2 minus 0 times x minus x0 that is 0. So this implies y equals to 2 upon pi times x. So this is the equation of the line passing through the point 0 0 and π/2 1. You see that so in this interval 0 in this interval 0 to π/2. So in this interval 0, so in the interval 0 to π/2 the line 2 upon pi times x less equals to sin x in 0 to π/2.
ठीक है। सो इस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी होल्ड होगा, ठीक है। इसको एज मैं 1/n इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एज 1/n 1/n less than equals to 1 greater than 0 always for all n belongs to n. So 1/n 1/n belongs to this interval 0 to pi by 2, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to 0 pi by 2. सो मैं x की जगह 1/n रिप्लेस कर देता हूँ. सो 2/pi times 1/n less equals to sine of 1/n for all n belongs to the set of natural number, ठीक है. Now we try to apply comparison test. So as sine 1/n is series of positive terms in the interval close interval 0 to pi by 2. So we now apply limit comparison limit नहीं comparison test. So also as 2/pi times series of n equals to 1 to infinity summation 1/n is divergent, as my p test series of 1/n is divergent. So by comparison test, series of sine of 1/n is also divergent. So the first series is convergent, but the second one is divergent. So this series sine of 1/n is divergent. So हमारा ऑप्शन क्या था? So ऑप्शन क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, रुकिए, स्क्रॉल करता हूँ. हाँ, ऑप्शन बी, an is convergent and summation over bn is not convergent. So option B is the correct one, ठीक है. So option B is correct.